नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेट वाला। मैं हूं सतीश कुमार द्विशेट्टी, फैकल्टी ऑफ मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। कैसे हो सब लोग? हमारा मेजरमेंट्स का लेक्चर्स कैसे चल रहे? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग माय लेक्चर्स। अभी आज हमने लेक्चर नंबर 10 पर आ चुका है। कल का क्लास में हमने ब्रीफली पावर मेजरमेंट एंड एनर्जी मेजरमेंट कर चुका है। सो I am covering the most frequently asked topics in the YouTube। बहुत सारा बच्चे पूछ रहे हैं सर एक एक टॉपिक, हर टॉपिक पढ़ाओ। लेकिन बच्चों ये YouTube सेशन है, YouTube में आपको लिमिटेड लेक्चर्स रहते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। हमारे पास कितना टाइम लिमिट है, उतना टाइम लिमिट में हमको जो कंटेंट दिया है वो कंटेंट आपको YouTube में जो मैं गारंटी दे रहा हूँ तो बता रहा हूँ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एंड आज हमने स्टार्ट करेंगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इफ टाइम परमिट्स विल डिस्कस क्यू मीटर ऑल्सो। ओके सो एक बार जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो बेटा। जितने लोग लाइव में हैं एक बार वॉइस कंफर्मेशन कर दीजिए, जल्दी से जल्दी कंफर्मेशन कर दीजिए बेटा। सो इफ यू सी द रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया है? हमने डिस्कस किया है एनर्जी मीटर, 2 watt meter method we have discussed। So what are the topics we have discussed in the previous lecture? Two watt meter method, next energy meter and gate PYQs we have discussed। okay so these are the topics हमने लास्ट क्लास में कवर कर चुका है। okay so many of the students are asking about my personal companies, so please make a note of this telegram channel t.me। so this is my telegram, okay so this is my mail id, you can follow this particular sorry not mail id, this is telegram channel। so there आपने आपका जो डाउट्स है टेक्निकल नॉन टेक्निकल कैरियर ओरिएंटेड डाउट्स भी उधर पोस्ट कर सकते हैं। चलो अब तक जो क्लासेस हो चुका है उसके ऊपर कुछ डाउट्स है तो बताओ बेटा। मैं 1 और 2 मिनट रुकता हूँ क्लास स्टार्ट करने के पहले। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स टिल नाउ कैन यू पोस्ट मी। अगर चाहे तो आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो भी डाउट है, अगर आपका प्रिपरेशन का हो। सर मेरी एसएससी जेई का तैयार कर रहा हूँ, ये भला मेजरमेंट का क्लास कर सकते हैं, हेल्प रहेगा। पूरा मेजरमेंट्स जो भी यूट्यूब में कंटेंट है मेरा
पूरा मेजरमेंट्स का कंटेंट, जो भी कंटेंट अवेलेबल है मेजरमेंट्स यूट्यूब के चैनल पर, वो सब कुछ आपके लिए भला यूजफुल होगा। नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर सीरीज, प्रीवियसली हमने 2022 से शुरुआत करके 2023 में भी हमने बहुत सारा कंटेंट डिस्कस किया, बहुत सारा बार, मोर नंबर ऑफ टाइम्स मैंने गेट चैनल पर मैंने डिस्कस किया मेजरमेंट्स। सो जो कंटेंट है ना वो कंटेंट पढ़ाओ बस है, ये यूजफुल होगा, बस नहीं बोल सकता हूँ, ये बहुत अच्छा यूजफुल होगा, फ्री में आप पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, आई थिंक आपका डाउट क्लैरिफाई हो गया। और कुछ डाउट्स है तो बता सकते हैं, बोल। इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर। ओके वाह, इज इट ओके? चलो, नाउ आज का क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। So the topics that we are going to discuss today are CRO, cathode ray oscilloscope. तो इसमें क्या क्या आएगा? Its working, its construction. One of the important topic है construction, working. नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ हमने डिस्कस करेंगे ऐसा फेज मेजरमेंट, फेज एंड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। फेज मेजरमेंट एंड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, एंड पॉसिबल विल डिस्कस सम गेट PSUs ऑल्सो। फटाफट जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो बेटा सेशन में। ओके, सो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या रहता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द फुल लेंथ डायग्राम ऑफ CRO। इफ यू सी दिस अ कंप्लीट डायग्राम ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। एक बार कंस्ट्रक्शनल फीचर्स देखो, ट्राई टू जस्ट सी द डायग्राम फॉर 1 minute। इट्स अ कंप्लीट क्लियर पिक्चर ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ओके, so first there is a cathode ray tube, ये पर्टिकुलर ट्यूब है ना, सो दिस अ कैथोड रे ट्यूब। इसके अंदर हमको इलेक्ट्रॉनिक गन असेंबली है, सो दिस और इलेक्ट्रॉनिक गन असेंबली। ओके, सो दिस अ कंट्रोल ग्रिड एंड दिस अ ब्राइटनेस ग्रिड। तो एक बार इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गया, फिर हम वी आर हैविंग सम एनोड सेटअप, देन वी आर हैविंग वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, देन वी आर हैविंग हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, एंड ये है फ्लोरोसेंट कोटिंग एंड ये है स्क्रीन। So this part can be called as deflection system, and this part can be called as electronic gun assembly. This part can be called as focusing anodes. Okay, so इतना डिटेल में मैं अगर है तो और एक डायग्राम में मैं दिख सकता हूं आपको, no need to worry. So first of all, what is CRT? Okay, CRT क्या होता है? Okay, take study. Okay, still any other doubt? If you have still any other doubt, you can ask me. Yes, thank you. Any other doubts? Okay. So what is a CRT? CRT is a vacuum tube. First of all, you should understand inside the CRO you are having completely low pressure, which is in mm of Hg. Okay, vacuum tube in which a beam of electrons, is accelerated and deflected under the influence of electric or magnetic fields. हमने magnetic fields use नहीं कर रहे, electric field ही use कर रहे, so remove this electric field, magnetic field remove करो. So अगर magnetic field है तो that is a television. In television we are using the magnetic field deflection, but in CRO we are using complete electric field. The electron beam is produced by an assembly called electron gun. So there is an electron gun in the initial. So it is located in the neck of the tube.
These electrons, if left undisturbed, travel in a straight line path until they strike the front of the CRT, the screen, which is coated with a material that emits visible light when bombarded with electrons. ये तो theoretical बात है. Okay. Sir, can we crack gate by watching this series? Nothing can be cracked just by watching, my dear. Nothing can be cracked just by watching. अगर आपने practice करना पड़ेगा, कंटेंट को लेने के बाद आप खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा. hours and hours of sadhana is required, then only you can crack the rank. Just by watching only the content. बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है आजकल यूट्यूब के चैनल पर, देखो तो इतना कंटेंट अवेलेबल है. नॉट ओनली फ्रॉम आवर गेट वाला इंस्टीट्यूट, सो मेनी इंस्टीट्यूट्स, सो मच कंटेंट इज अवेलेबल. लेकिन आपको रैंक क्रैक करने के लिए क्या करने हैं? आपको रैंक क्रैक करने के लिए आपका प्रैक्टिस होना है. ओके, दीज आर ऑल जस्ट टूल्स, दीज आर ऑल जस्ट गाइडलाइंस. ओके, ये गाइडलाइंस यूज करके आपने खुद से प्रैक्टिस करना है. आप कितना मेहनत कर से खुद से, उसके अनुसार आपको रैंक आने की चांसेस है. चलो लेट अस सी वन मोर डायग्राम. So in detail diagram, so this is a complete picture of the cathode ray assembly. So if you see, this is an electron gun. So this is an electron gun. So from electron gun, whatever the electrons coming, so they are undergoing to certain set of plates. Okay. So if you see the total main parts of the cathode ray oscilloscope, the main parts of the cathode ray oscilloscope are classified as these parts. प्रैक्टिस करना पड़ेगा. आप बुक्स पढ़ो एंड यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फ्रॉम गेट PYQ सीरीज. हमारा गेट वाला का बुक्स अवेलेबल है. अगर चाहे तो मैं देख सकता हूं आपको, शो यू द बुक्स, यू कैन परचेज द बुक्स. ओके, सो यू कैन परचेज दिस बुक्स. गेट वाला का बुक्स है, गेट PYQ अवेलेबल है हमारा. ओके, so these gate PYQs are available completely. so ये completely 2008 to 2023 तक, 2008 to 2023 तक आपको बुक्स पूरा कंटेंट अवेलेबल है. आपको कितना सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिकल में उतना पूरा बुक्स अवेलेबल है, पूरा PYQs अवेलेबल है. so ये ऑलमोस्ट आपको अराउंड इंक्लूडिंग वीडियो सॉल्यूशंस, प्राइस भी अवेलेबल है इधर MRP 800 रुपीज में, इंक्लूडिंग वीडियो सॉल्यूशंस. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंक्लूडिंग वीडियो सॉल्यूशंस. अगर इसके ऊपर एक स्कैन कोड रहेगा, अगर आप स्कैन करें तो ऑटोमेटिकली आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा. इतना अच्छा बुक कंटेंट आपको मार्केट में अवेलेबल, इतना सस्ते में आपको नहीं मिलेगा. ये फिजिक्स वाला मोबाइल ऐप पर है, अप्लाई अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर. इफ यू गो टू द प्ले स्टोर, इन द प्ले स्टोर देयर इज ए physics wala app. So in that app you can see these books. So all for electrical students, electronic students, ये books are available. So I suggest these are the best brand books because हमने कुछ मेहनत करके उसका वीडियो सॉल्यूशन भी हमने दिया है. So आप आराम से ये बुक ओपन करके आप देख सकते हैं. Okay, so I am not just saying that marketing purpose, because हमने खुद मेहनत कर दिया. पूरा फैकल्टीज ऑफ द गेट फैमिली, हमारा जो हमारा इलेक्ट्रिकल का फैकल्टी से महारथी है, अजय गुप्ता सर हो एंड वरुण सर हो, जो भी फैकल्टी से महारथी है इलेक्ट्रिकल का, पावर मेजर, पावर सिस्टम्स, मशीन्स का फैकल्टी, उसका पूरा मेहनत करके उसका पूरा सेट एंड सॉइल, एवरीथिंग दे हैव केप्ट इन दैट बुक. ओके, सो यू कैन परचेज दैट बुक एंड यू कैन गो थ्रू इट, फॉलो द वीडियो सॉल्यूशंस एंड परचेज द बुक्स. सिट इन अ कांस्टेंट posture, sit in a particular room and don't be distracted, everything is okay. So these are the parts, my dear. First part is a cathode ray tube, second part is a electron gun assembly, third part is a deflection plates. Deflection plates are two types, one is a horizontal, other one is a vertical. So if you take the deflection plates can be categorized as horizontal deflection plate, and other one is the vertical deflection plates. Okay, next, fluorescent screen for the CRT. This is a fluorescent screen for the CRT. So what is fluorescence? Whenever a invisible light hits, that is converted to visible light. Okay, na? Next comes the glass envelope. So these are the 5 parts. So first let me explain some important things here. Before entering into that, I want to explain the important things only. So what are the important things now? So here, this is the best picture. So if you see the first part, this is the electron gun assembly. In electron gun assembly, there is a cathode here. This is a cathode. So this cathode internally gets heated when you are power on. So there is a concept called thermionic emission. So thermionic emission.
that is a working principle of thermionic emission. This is the working principle of CRT. Thermionic emission. This is a working principle of the cathode ray oscilloscope. Try to understand. This is a working principle of the, because of the heating effect. Because of the heating effect. Good evening. Good evening. Yeah. Thank you, Henry. You're regularly attending my class. I'm very happy to see you. Being a diploma holder also, you're regularly attending my class. Very happy to see you every time. Okay. Good evening. So thermionic emission use करते हैं because of the heating effect the electrons are emitted. So that's why it is called thermionic emission. So जो electrons है ना, so this particular electron जो कुछ बाहर आ रहे हैं, so definitely once electrons come they will be distracted. They will be distracted. That's why we are having certain setup. So there are three types of anodes here. So this is what we call as pre-accelerating anode. Pre-accelerating anode, I will write in a less. So this how to write, these are the anodes, complete set of anodes. The first one is the pre-accelerating anode, next one is the focusing anode, and the last one is the accelerating anode. Okay, three anodes, pre-accelerating anode, focusing anode and accelerating anode. So ये आप समझ में आना है, what is the set of these anodes? थैंक यू हेनरी. जो अलॉटेड है ना हमको टास्क को करना है, उसमें देयर इज नथिंग मोर देन द वर्क. ओके, हमको जो वर्क अलॉट हो चुका है उसको करना है. आई एम हैप्पी दैट सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेगुलरली कमिंग टू यूट्यूब सेशंस. एक्चुअली अब देख रहा हूँ यूट्यूब में डेली स्ट्रेंथ कम होते जा रहा है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है फ्री में. इतना होने के बाद भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग टू माई क्लासेस. आई एम सो हैप्पी फॉर दैट. ओके माई डियर. सो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग, सो ये हमारा एनोड्स का सेटअप है. दिस इज व्हाट वी कॉल प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, इट इज कॉल्ड फोकसिंग एनोड, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग एनोड. सो प्री एक्सेलरेटिंग एनोड क्या करता है, फोकसिंग एनोड क्या करता है? तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं ना, सो दे विल बी डिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस. सो दिस प्री एक्सेलरेटिंग एनोड इज मेंटेन्ड विथ ए हाई पोटेंशियल. So this anode, so this is a negative, this is a positive. Okay na? So what happens now, whenever it is attached with high voltage of some 1000 volts like that, then what happens, this particular electrons are attracted towards it. Once they are attracted towards it, so when they come out, there is a focusing anode. So this focusing anode again makes electrons to focus in a single beam. So now they are set right, and then they will finally enter into accelerator. जो इलेक्ट्रॉन गन से बाहर निकलता है ना, वो पहले इनडिसिप्लिन था, डिस्पर्सिव था. वो इलेक्ट्रॉन्स को पहले अट्रैक्ट करके, उसके बाद फोकसिंग करके, देन एक से एक स्ट्रेट पाथ में लगा के हमने छोड़ रहे. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन. Okay, so in CRO we are using electrostatic deflection. So this particular anode setup is acting like just like concave lens in optics. इन ऑप्टिक्स जैसा हमारा कांति हमारा लाइट लेंस के अंदर एंटर होता है, फोकस होता है, फोकल एनोड से फोकसिंग लेंथ के डिस्टेंस पे फोकस करता है. इन द सेम वे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी, इलेक्ट्रॉन जो बहुत तेज से आ रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन बिकॉज ऑफ थर्मियोनिक एमिशन, बाय यूजिंग दिस सेटअप ऑफ three setup. One is the pre-accelerating anode, next one is the focusing anode, next one is the accelerating anode. इसमें pre-accelerating anode and accelerating anode both are maintained at the same potential, whereas focusing anode is maintained some lesser potential so that electrons are attracted towards it. Okay na? So that is the point here my dear. So pre-accelerating anode, focusing anode, accelerating anode, ये तीन मिला के एक इलेक्ट्रॉन बीम की तरफ से करते हैं. एक स्ट्रेट बीम आएगा. Now this straight beam is entering into two types of plates. One is a vertical deflection plates, other one is a horizontal deflection plates. सर एक्चुअली क्या करता है CRO? CRO हमारा सिग्नल को मेजर करता है
हमारा जो मेजर है वोल्टेज सिग्नल है, करंट सिग्नल है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पैरामीटर है ना, उसको मेजर करना है. सो देन हाउ दिस इलेक्ट्रॉन्स आर रिलेटेड टू आवर मेजरमेंट, आपको ये डाउट रहता है ना. सो हम क्या करते हैं, नाउ दिस पर्टिकुलर वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स है ना, उसको वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को हमारा टेस्ट सिग्नल, दिस इज आवर टेस्ट सिग्नल. हमारा जो मेजरमेंट करना है वो मेजरमेंट करने का सिग्नल है ना, वो सिग्नल यहां से आएगा. सो दिस सिग्नल इज गिवन टू वर्टिकल एम्पलीफायर. Vertical amplifier. So this vertical amplifier will amplify it. This vertical amplifier will amplify the signal. Then it is somewhat slightly delayed and given to this vertical deflection plates. Now क्या होगा? The electrons which are entering to vertical deflection plates, एक बार आपको vertically एक voltage दिया है ना, according to this voltage क्या होगा? These electrons are going to get deflection. These electrons are going to get deflected. That's what going to happen. So कितना डिफ्लेक्शन होगा, कितना डिफ्लेक्शन होगा, that depends upon your test signal amplitude. Try to understand. That depends upon your test signal amplitude. इज इट क्लियर? अगर आपने मैं ऐसा जा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स का भी मैं ऐसा जा रहा है. अगर आपने 2 वोल्ट्स दिया है देन 2 वोल्ट्स तक डिफ्लेक्शन होगा. अगर आपने 3 वोल्ट्स दिया है 3 वोल्ट्स तक डिफ्लेक्शन होगा. अगर आपने 4 वोल्ट्स दिया है 4 वोल्ट्स तक डिफ्लेक्शन हो जाएगा. अगर आपने 100 वोल्ट्स दिया है 100 वोल्ट्स तक डिफ्लेक्शन. अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ योर टेस्ट सिग्नल, आपका इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू डिफ्लेक्ट. देन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टिंग, then what about the time signal? So time signal, why? Because हमको सिग्नल कैसा चाहिए? सिग्नल के लिए एक x एक्सिस का सिग्नल होना है, y एक्सिस का सिग्नल होना है. x एक्सिस पर हम टाइम देते हैं, y एक्सिस पर हम एम्पलीट्यूड लेते हैं. समझ गए बेटा? सो हमने क्या कर रहे इधर देखो. So this is the point now, vertical deflection plates. इसके बाद it is entering to horizontal deflection plates. Horizontal deflection plates में क्या हो गया? एक horizontal deflection plates में this is going to have a time based signal. So for horizontal deflection plates, from time based generator we are getting a time signal. So until that particular signal is going to be stretched. So the electron which is coming like this, it is going to stretch according to the amplitude and it is going to maintain, and the next signal like that. So whatever the signals are coming, so the electron beam is going to stretch like this. So if you want to understand, I want to give this diagram. So if you see this diagram, then you will clearly understand this picture. See, these are the vertical deflection plates, my dear. For this vertical deflection plates हमने deflecting voltage दे रहा है. So this is the voltage to be given. So this is our test signal, okay ना? So this test signal voltage is given to amplifier. So amplifier होने के बाद जो voltage आ रहा है, so this voltage is given to this deflection plates. That's why this voltage is called the unknown voltage, we can say. That only we want to measure. According to this amplitude, the signal is going to get deflected. Yes, sawtooth pulses. Nice. That is a time based signal. Okay, chalo. Now jo ED here na, according to ED the deflection will start. So here some parameters are there. इसके ऊपर एक क्वेश्चन आने की चांस है गेट एग्जाम में, SSC JE में, IES में. क्या है क्वेश्चन देखो. So these are our deflection plates. So these are length of the deflection plates LD I am taking. So length of the deflection plate is LD. So these are length of the deflection plates. So these are length of the deflection plate. Okay, these are length of the deflection plates. Next, this one, the small d, that is the distance between the plates. Okay, and ED is the voltage that is applied to the deflection plates. And from the center to this deflection, so this is the angle theta. Okay, so now if you take the total, so from this to this, from the center of this deflection plates to the fluorescent screen, that distance is capital L. And this theta is a deflection, and this capital D is the distance from the center to that. Okay, do you understand this diagram? Anywhere any doubts you can, I have already connected this all information in a slide. Dekho. So this is what ED first. So this is the ED. This is the ED, my dear. Sorry sir, this is the EA. This is the EA. This one, first of all, the electron which is entering to here, that will be coming with a voltage. To understand, there are 2 voltages here. If you see this picture, there are 2 voltages. The electrons which are entering here, let me clean this. So first of all, the electrons which are entering here,
the electrons which are entering here, this is accelerating anode na. So the electrons which are entering here, so they're entering with a voltage. What is that voltage? Accelerating anode voltage. But once they enter into vertical deflection plate, there is another voltage. What is that voltage? Deflection plates voltage. हमारा measurement E है, ED है. Electron already कुछ से कुछ voltage से आ रहे हैं. That is a EA, accelerating anode voltage. So that's what we have written here. So this is the EA, voltage of pre-accelerating. So this is the VEA, voltage of pre-accelerating anode in volts. Okay, EA is the voltage of pre-accelerating anode in volts. E is the charge of electron in coulombs. So charge of electron आपको पता है कितना होगा, आपको पता है, that is 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulombs. Next, M is the mass of electron, so that is 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg. Okay, next VOX. This is a VOX. This is a VOX. This is the electron accelerating anode voltage से आ रहा है. So this VOX is what? Velocity of the electron at which it is entering. So VOX is velocity of electron when entering into the deflection plates in meter per second. Next, ED. ED is the potential between the deflecting plates in volts. So this is a potential deflection plates का जो voltage apply कर रहे हैं. So that voltage. Next, T, small d is the distance between the deflecting plates. So this is a small d, distance between the deflection plates. So just I want to keep a indication for you. So this is our so these are the deflection plates, so no confusion. Okay, so these are the deflection plates. So small d is the distance between the deflecting plates in the meter. Next, small ld. Small ld is the length of the deflection plates. This should be small ld, mistake. This is a small ld. And capital L is a distance between the screen and mid of the deflecting plates. Capital D is a deflection of electron beam on the screen in y direction. Please make a note of this picture once again. All of you have a screenshot of this picture because I am going to give a hint now. Formula है, एग्जाम में पूछ रहे क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन के ऊपर फॉर्मूलास भी बहुत अच्छा आ रहा है. सो इसके अनुसार मैंने आपको आई वांट टू गिव ए फॉर्मूला. फर्स्ट प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पैरामीटर्स. फर्स्ट प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पैरामीटर्स. व्हाट आर द पैरामीटर्स? ED, LD, D, L, EA. Try to understand these parameters first.
नोट कर दिया बेटा? अरे एक्सेलेंट रे हनरी, सुपर सुपर सुपर। कैसा पता आपको? आई एम वेरी हैप्पी। हाउ डिड यू रिमेंबर दिस? थोड़ा मिस्टेक है, स्मॉल मिस्टेक है इसमें। आई हैव कंप्लीटेड ऑल एसएससी जेई सिलेबस। कहाँ से पढ़ लिया? स्मॉल मिस्टेक है इधर। ओके, आई विल टेल यू व्हाट इज दैट मिस्टेक। सो what is that? The deflection. So the deflection which is represented as D. Okay, deflection D is represented as Lilly to Delhi. Lilly to Delhi. So this is the expression. Lilly to Delhi. Okay, try to remember. I don't have much time to revise syllabus due to semester exam, sir. Okay, thank you. Nice. So Lilly to Delhi, ED will be there in the numerator. In the numerator, ED will be there. Okay, na? So that was a technique I used to tell. Lilly to Delhi. Lilly gaya Delhi. तो हमने ऐसा लिखते हैं लिल्ली टू दिल्ली और दिल्ली। लिल्ली गया दिल्ली, ऐसा एक मूवी भी ले सकते हैं हमने। मूवी का टाइटल लिल्ली टू दिल्ली। नाइस शॉर्टकट। सो आप ये शॉर्टकट रिमेंबर कर सकते एग्जाम में। एंड ये कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। कंफ्यूजन में क्या है ना, ईडी ईए में ऊपर कौन है नीचे कौन है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा डिफ्लेक्शन वोल्टेज इज अननोन पैरामीटर ईडी। So this is our test signal. Try to understand. So next comes the sensitivity. Next parameter is our sensitivity. Deflection sensitivity. Sensitivity. So sensitivity is equal to S. Okay. So what is the sensitivity? Sensitivity generally क्या होता है? Output by input होता है. Suppose if you take the CRO as a block. Suppose if you take a CRO as a block, उसका इनपुट है डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज, इसका आउटपुट है डिफ्लेक्शन D. ओके, सो सेंसिटिविटी बोलो तो क्या है? आउटपुट बाय इनपुट। सो D बाई ED होता है सेंसिटिविटी का मतलब। सो D बाई ED हो जाएगा, D बाई ED हो जाएगा। सो देन इसका एक्सप्रेशन होगा LLD डिवाइड बाई 2D EA होगा। ओके, नेक्स्ट वन मोर पैरामीटर है डिफ्लेक्शन फैक्टर। डिफ्लेक्शन फैक्टर, सो दैट इज डिफ्लेक्शन फैक्टर वन बाई S. Okay, that is called 1 by S. So that is opposite 2D EA by. So इसका यूनिट्स क्या है? मीटर्स। इसका यूनिट्स क्या है? मीटर्स पर वोल्ट। I am writing here, this is meters. So this is here per volt. This is volt per. Okay, so please take of this. very important slide है, आप नोट करो बेटा। हाँ यस
नोट करो। एक मिनट ब्रेक दीजिए, थोड़ा सा लेग पेन आ रहा है। ओके, नोट कर दिया बेटा। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको फार्मूलास को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डिफ्लेक्शन का फार्मूला, सेंसिटिविटी का फार्मूला, डिफ्लेक्शन पैटर्न का फार्मूला मैंने दिया है। चलो नाउ कॉन्सेप्ट्स मैं बताता हूं आपको। चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द मोड्स ऑफ सीआरओ। मोड्स ऑफ सीआरओ। सो सीआरओ का मोड्स कैसा होता है? देयर आर टू मोड्स ऑफ वर्किंग। वन इज द YT मोड, अदर वन इज द XY मोड। YT मोड एंड XY मोड। YT मोड में क्या होता है, XY मोड में क्या होता है? दैट इज बेस्ड अपॉन व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल आपने वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को दे रहे हैं, उसके अनुसार इट कैन वर्क इन YT मोड एंड XY मोड। ओके,
तो YT मोड मीन क्या है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को हमारा टेस्ट सिग्नल दे रहे हैं एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को हमें टाइम बेस्ड सिग्नल दे रहे हैं. सो इन दैट केस हमने क्या क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, RMS वैल्यू, पीक वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, दैट मीन सिग्नल का वैल्यू. लेकिन अगर XY मोड बोलो तो क्या है ना, दोनों वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को अगर आपने साइनसॉइडल सिग्नल अप्लाई कर रहे, देन व्हाट हैपेंस, वी आर गोइंग टू गेट सम इंप्रॉपर पैटर्न्स. उस पैटर्न्स को हम बोलते हैं लीसेजस पैटर्न. इज इट क्लियर हेनरी? So YT mode and XY mode, try to understand this YT mode and XY mode. Okay, so I want to give a clear cut picture. In YT mode, what is going to happen? In YT mode, if you take, these are the vertical deflection plates and these are the horizontal deflection plates. So for vertical deflection plates and horizontal deflection plates, so for vertical deflection plates, we are going to give our signal. So this is our signal Y versus this is our test signal. For horizontal deflection plates, so these are horizontal deflection plates, we are going to give our X plates, so that is our time based signal. So what you are going to give? So we are going to give a time based signal. So this is our time based signal. This is our time based signal. This is what we call as time based. This is what we call as test signal. So as a result, what happens now? As a result, what we are going to see on the CRO, on the screen, what we are going to see, the result is nothing but, we are going to see on the result, we are going to see our test signals amplitude. So this is our V, Y versus T. So this is a YT mode. So whereas XT mode, YX mode, that is different story. So if you go for XY mode, in XY mode, for both vertical deflection plates and horizontal deflection plates, so we are giving the sinusoidal signal. So the two sinusoidal signals may be having phase shift, or they may be having some frequency shift, whatever. Okay, so like that we are giving. Then as a resultant, what we are going to get on the X and Y axis, we are going to get some Lissajous patterns like this. Lissajous patterns. So Lissajous patterns will represent the time and phase shift. So यहाँ आपको ये measurements रहेगा, Lissajous patterns पर आपको time shift and time and phase measurement का होने के chances. तो एक बार directly देखेंगे हमने. So let us see the Lissajous patterns first. One of the important point in the Lissajous pattern in the exam, the Lissajous patterns is the most expected. Are you there, all of you? Yeah. Suno. When both pairs of the deflection plates, horizontal deflection plates and vertical deflection plates of CRO are connected to two sinusoidal voltages, both are connected to two sinusoidal voltages, the patterns appear at CRO screen are called Lissajous pattern. So what we call them as? We call them as Lissajous pattern. We call them as Lissajous pattern. The patterns up at CRO screen are called as Lissajous pattern. Okay, so shape of this Lissajous pattern changes with the changes of the phase difference between the signal and ratio of the frequencies. So what happens now? The shape of the Lissajous pattern is going to change according to the phase shift and according to the frequency shift. अगर दोनों के सिग्नल के बीच में कुछ फेज शिफ्ट है, उसके अनुसार Lissajous पैटर्न चेंज होता है. दोनों सिग्नल के बीच में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, उसके अनुसार पैटर्न चेंज होता है. So shape of this Lissajous pattern changes with change of phase difference between signal and ratio of the frequency applied to the deflection plates of the CRO. Okay. Now let us see step-by-step analysis. Suppose, so this is the phase angle difference. क्या होगा एक बार ध्यान से देखो. ओके, इसमें क्या हो रहा है? सपोज बिटवीन द Y प्लेट्स एंड द X प्लेट्स जो सिग्नल अप्लाई हो चुका है, सपोज दे आर हैविंग द जीरो फेस, द फेज शिफ्ट इज 0 डिग्रीज. दैट मीन्स सो हमने वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को, सो दिस इज X फॉर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, दिस इज फॉर वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स. सो इन दोनों केसेस हमने सेम सिग्नल दे रहे. Suppose if you are giving the same signal here, vertical deflection plates ko, horizontal deflection plates ko, there is no phase shift.
the phase shift is 0, so there is no phase angle, then we are going to get a straight line. What we are going to get? We are going to get a straight line in the first and third quadrant. Like this is the first quadrant, this is the third quadrant. Is it clear? Is it clear, all of you? So these हमने prove कर सकते हैं. What do you do when you feel demotivated and depressed? I will close my eyes for 20 minutes. I will just focus on my breath. Then automatically I will get some charging. What I am doing, I am getting. When I feel demotivated and depressed, I will close my eyes and I will just sit in a calm position. I will focus on my breath. I will do some breathing exercise और natural breath को मैं observe करता हूँ, जो लोग meditation भी बोल सकते हैं उसको. So इसमें क्या होता है ना, body थोड़ा, mind is going to become calm and quiet. Once the mind becomes calm and quiet, automatically you are going to get charged. Your body gets charged. The reason why the body gets stressed is your mind is clumsy. So when you make calm mind, then automatically body also gets stressful. Okay. So this is the phase angle difference of 0 and 360 degrees. Suppose now the phase shift is from 0 to 90 degrees. That means more than 0, less than 90. Then we are going to get an ellipse like this in the first quadrant and in the third quadrant. Next, suppose if the phase shift is 45, then also ellipse we are going to get in the first quadrant and the third quadrant. So ellipse we are going to get. These all are ellipse. So here it is a straight line. Okay, but when it is 90 degrees, 60 also ellipse. But once it is 90 degrees, we are going to get a circle. Okay, so this is a clockwise circle. So this is a circle when the phase shift is 90 degrees. That means what? When it is possible, my dear. So if you take vertical deflection plates and horizontal deflection plates. So these are vertical deflection plates, these are horizontal deflection plates. These are y versus time, these are x versus time. These are vertical deflection plates and these are horizontal deflection plates. Horizontal deflection plate is signal is like this, but vertical deflection plate signal is 90 degrees phase shift. That means like this. In this scenario, we are going to get circle. Okay. Suppose y of t is having, that is sin omega t plus phi. So the sin omega t plus phi 90 degrees, whereas this is sin omega t. ये दोनों के बीच में फेज शिफ्ट 90 डिग्री से अगर आपको सर्किल आएगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी आर गोइंग टू एनालाइज द टू सिग्नल्स. ये सर्किल बन गया. क्लियर हो गया बेटा? जितने लोग लाइव में देख रहे हैं. एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी. हेनरी. ओके, चलो. अगर आपने 90 क्रॉस हो रहे, then you are going to get ellipse again, but this time the quadrants are second and fourth. Which quadrants you are going to get? Second and fourth. So try to understand. Once you are less than 90, you are using the quadrants 1 and 3, but once you cross the 90 degrees now, so slowly you are entering into quadrants 3 and 4. So quadrants 3 and 4 में आ गया. Crystal clear होना है. As long as your angle is less than 90 degrees, your quadrants will be 1 and 3 and clockwise, but once you cross now, then the quadrants are changing 2 and 4. So this also ellipse. Next, 150 also ellipse. Next, 180 again you are going to get straight line. So once again you are going to get a straight line. So this straight line is in the quadrants 2 and 4th quadrant. Second and fourth quadrant. Try to understand what quadrant? Second and fourth quadrant. Chalo. Now
So this is the scenario. Now suppose if they're having the frequency shift, अब दोनों के सिग्नल्स के बीच में फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है, that means what I mean to say, the y of t is a sin omega 1t, x of t is a sin omega 2t. that means दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है, फेज शिफ्ट नहीं है. previously there was a phase shift, now frequency shift. ये दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है. अभी क्या होगा? सो देन क्या होगा? लीसेजेस पैटर्न का एक इंपॉर्टेंट है, इसमें सम इम्प्रॉपर पैटर्न आएगा, उसमें हमने क्या करना है, उसका मेजरमेंट करना है. कैसे मेजरमेंट करना है? फ्रीक्वेंसी को, इंटरसेक्शन पॉइंट्स को लेना है. सो देयर आर टू मेथड्स. द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ सिग्नल्स अप्लाइड टू द डिफ्लेक्शन प्लेट्स रिलेटेड एज fy by fx is equal to number of horizontal tangencies by number of vertical tangencies. प्लीज ट्राई टू रिमेंबर, अपोजिट होना है. इधर y एक्सिस है, इधर हॉरिजॉन्टल होना है, इधर x एक्सिस है, इधर वर्टिकल होना है. सो fy by fx कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टैंजेंसीज बाय नंबर ऑफ वर्टिकल टैंजेंसीज. अंडरस्टूड? सिमिलरली fy by fx or else other pattern is number of intersections on horizontal line and here number of intersections on vertical line. ऐसा भी ले सकते हैं. ओके वा, ऐसा भी ले सकते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंटरसेक्शन पॉइंट्स. टू टेक्निक्स है, तो एक डायग्राम से लेंगे हम, इजी अंडरस्टैंड हो सकता है. सो लेट मी टेक द डायग्राम्स फर्स्ट. सेकंड, now tell me how to do this. So this is the shape. Suppose this is the shape we got. So इसके लिए कैसा करना है? Try to do and tell me फटाफट. Yes, very very important topic है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ गया. अभी बताओ रिलेशन. आंसर प्लीज. आंसर प्लीज. तो उसका आंसर कैसा लेना है? देखो, हाउ टू टेक द आंसर फ्रॉम इट. fy by fx. टू मेथड्स में मैं बताऊंगा. विल टेक टू मेथड्स. The first method is drawing the intersection. First we will take horizontal tangencies. So this is one tangency, this is one tangency full. Next vertical tangencies. This is one tangency and this is one. एक काम करूंगा, मैंने डायग्राम को डुप्लीकेट करूंगा so that easy हो जाएगा आपको. Yeah. So let me take tangencies first. So this is a horizontal tangency. So कैसे लिख सकते हैं इधर? fy by fx is equal to number of horizontal tangencies divided by number of vertical tangencies. So number of horizontal tangencies ये है. This is one tangency, this is one tangency, this is one tangency, this is one tangency. So 2 plus 2 4 divided by vertical tangencies. वर्टिकल tangency क्या होगा? इधर वर्टिकल tangency, this is 1 and this is also 1. So 1 plus 1 क्या होगा? 2 होगा. So it becomes 2 by 1. So fy is equal to 2 times of fx. This is method 1. Okay, this is method 1. मेथड 2 क्या है?
Method 2, taking intersection points. Intersection points is very tricky, try to understand. So intersection points kaisa lena hai? There should not be common intersection point. There should not be any common intersection point. Is it clear? Voice clear hai? Chalo, kaisa lena hai intersection points? There should not be common intersecting point, my dear. So you take like this, and next you take like this. So Fy by Fx is equal to number of horizontal intersections divided by number of vertical intersections. कैसा remember करना? Y axis के लिए opposite आता है horizontal, x axis के लिए vertical आएगा. Horizontal intersections how many here? देखो ध्यान से कितना आ रहा है intersections? 1, 2, 3, 4 divided by vertical 1, 2. So आंसर कितना होगा? 2 by 1 होगा. So Fy by Fx is equal to 2 times of Fx. So that is the point. Is it clear? Chalo. Next, let us go for another diagram. Yeah. Try to answer this diagram. Try to answer this question. इसका आंसर क्या होता है? So if you see the answer here, first let us go with the horizontal method, tangencies method. So this is one tangency complete. This is another tangency. So Fy by Fx, number of horizontal tangencies by number of vertical tangencies. So अभी horizontal कितना है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 divided by number of vertical tangencies. If you see the vertical tangencies, this is 1, 2, this is also 1, 2. So this is 2. Answer कितना होगा? 3. So Fy is equal to 3 times of Fx. This is method 1. Or else if you go with the intersection points method, if you go with the intersection points method, yeah, these are intersections. If you see the intersections here, Fy by Fx is equal to number of horizontal intersections divided by number of vertical intersection. Am I right? So kaisa hai horizontal intersections? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 vertical intersections common. 1, 2, 3, 4. So 3 by 2 आ रहा है. Sorry, vertical tangents मैंने mistake कर दिया इधर. 4 आएगा इधर. And then mistake. This is 6 by 4. 1, 2, 3, 4.
So 3 by 2. Okay. Six by 4 is correct. Sorry, 6 by 4 is correct, Henry. 3 by 2. आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं. टू मेथड्स में यही एडवांटेज है. आप हॉरिजॉन्टल टैंजेंसीज मेथड अप्लाई कर सकते हैं, इंटरसेक्शन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं. सो हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग टू मेथड्स. सो fi by fx, fi is equal to 3 by 2 fx. क्लियर है? दैट इज अ पॉइंट. क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं आप. अगर आपका आंसर सही है नहीं सही है, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं टैंजेंसीज मेथड से, इंटरसेक्शन मेथड से. चलो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन नाउ. Try 6 by 8. Okay. You're telling 6 by 8. Let us see. Six by 8 कैसा होगा? Let us check. Tangencies horizontal ऊपर नीचे, vertical साइड बाय साइड. क्लोज्ड पिक्चर है ना, सो 2 लेना है. सो fy by fx, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टैंजेंसीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्टिकल टैंजेंसीज. हॉरिजॉन्टल कितना है? 1 2 3 4 5 6. वर्टिकल टैंजेंसीज, सो 1 2 3 4 1 2 3 4 8. so 3 by 4. fy by fx is equal to 3 by 4. Yes, this is one method. Intersection method देखो, this is intersection method. So fy by fx, I can take number of horizontal intersections divided by number of vertical intersections. If you take horizontal intersections कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6. and vertical intersection देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. so this fy is equal to 3 by 4 into fx. Am I right? Try to answer this question now.
क्या है, कौन क्वेश्चन पूछ रहा है इधर? somebody is asking a question. What is the question? Why ground is required for electrical circuit? तो very basic question है. protection के लिए electrons very easily they can pass through the zero resistance path. ground zero resistance path create करता है. so safest way में अगर fast में electrons आ रहे so that electrons can be reached to the ground very safely. This is very tricky. Here if you apply the tangencies method क्या होगा? See, if you apply the tangencies method, how to apply the tangencies method? Can you tell me in tangencies method what we are going to get? So if you are taking Fy by Fx is equal to number of horizontal tangencies divided by number of vertical tangencies. So what are the number of horizontal tangencies here? If you see here, this is complete, but this is not complete. This is partial. So I can take 1 plus half at the top. Next here, this is complete picture, but this is half. So 1 plus half at the top. Next, coming to the vertical tangencies. So vertical tangencies क्या होगा? This is our vertical complete, and this also complete. So 1 plus 1. So this is 1, this is 1. So 1 plus 1. Am I right? So कितना आ रहा है आंसर? 1 plus 1. So this 1 plus 1 3 by 2 आ रहा है. Am I right? 3 by 2. 4 by 2 or 3 by 2. Yes. Here this is not complete. This wave is not complete, my dear. That's why it should be like this. The touch should be like this. The touch should be like this. That's why the tangencies method will be confusing in this half scenarios. If you go for intersection methods, no problem. So if you go to the intersection methods, we go for the intersection method. See this intersection method. So this is intersection, this intersection. That's it. 3 by 1. Mistake किया हमने. Sorry, this is also half na, because this wave is not complete. Sorry, I have done a mistake here. So this is also half, this is also half. So it will become 3 by 1. That's why confirmation के लिए हम वो use कर सकते. So Fy by Fx is equal to 3 by 1. This is not full na. This is also half. This is also half. This is also half. ये complete नहीं है. ये complete है. ये 1 है, ये half है. ये complete है. ये इसको कर्व को touch करे. 1 है, ये half है. अभी क्लियर हो गया ना? हाफ पिक्चर बोलो तो क्या है ना, ये वेव फॉर्म इज नॉट कंप्लीट. सो हियर दिस पर्टिकुलर tangent is touching the complete wave. That's why it is 1. It is touching not the wave, it is touching a part of the wave. That's why it is half. It is touching the complete wave, fully tangent. So this is 1. It is touching half. That's a half. Whereas this one, it is not touching the complete wave like this vertically. It's touching a line. So that's why it's half of. So both ends half of 3 by 1. अगर आपको ये मेथड में कंफ्यूज है तो इंटरसेक्शन मेथड में जाओ, इजी होगा. हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शंस वेरी इजी होगा. इंटरसेक्शंस में हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शन कितने हैं? 1 2 3 बस. वर्टिकल इंटरसेक्शन कितना है? केवल 1. सो Fy by Fx is equal to 3Fx. So got it? Understood? That's the reason why I'm explaining the two methods, my dear Henry. Yeah. चलो लास्ट एग्जाम्पल मैं देता हूं. Yeah, I'm giving this example. Try it. Try on your own.
Right. Try it and tell me. चलो चलो चलो, ठंडी हवा लेने के लिए गया है हेनरी भाई. या व्हाट इज आंसर? 5/3. Is it 5/3? Seriously? Let me check here. So let me take horizontal tangencies first. So 1 2 complete, this is half. 1 2 complete, this is half. So Fy by Fx, Fy by Fx, number of horizontal tangencies divided by number of vertical tangencies. You see this is 1 complete, 1 1, this is half. So 1 plus half at the top, and this is 1 complete, and this is a half. So 1 plus half at the bottom. So total कितना हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया vertical tangencies. If you take the vertical tangents, very interesting. Vertical tangencies, this is 1, this is half. Okay. This also 1 and half. So 1 plus half,
1 प्लस हाफ. सो कितना होगा fy by fx 1 2 3 4 5 by 3 होगा. 5 by 3 आ रहा है आंसर. और आपने इंटरसेक्शन मेथड जाओ, इंटरसेक्शन मेथड वेरी क्लियर होगा. सो दिस इज 1 2 3 4 5. दिस इज 2, this is 3, this is 4, this is 5, and this is 1, this is 2, this is 3. So fy by fx is equal to 5 by, right? Perfect. That's it, my dear. I hope all of you followed. These are the major questions that you are expected in the frequency measurement and phase measurement. Enough for today. Okay. बस है आज के लिए. So this is a complete series of lecture. Okay. All of you enjoyed the sessions? Any doubts till now? You can ask me. If you face still any doubts, you can ask me. Not only now, you can ask me in the Telegram channel also. Any other doubts, you can ask me here. Fine. Thank you. Enough.